high. There is nothing wrong, even if your dream is an utopian idea. If you enter into a particular profession, you must aspire to reach the top position in your chosen field. And the third factor is that you should also be pragmatic in your approach. You should know that there are more downs in life than ups. And therefore, you need to learn the art of playing the curved ball in life. You look into the history of any great men and women of the world, and you will find that they have faced innumerable number of failures, but they had never ever given up. And whilst doing that, you should also learn the art of transforming your failures into successes. Apart from that, you should also learn from the mistakes committed by your fellow colleagues so that you don't commit those mistakes and you can accelerate the pace of your growth and development as a good professional. And let me share with you that these things are not very hard. There are some mantras actually which you should remember. And of them, the first and the foremost mantra is that there are no shortcuts in life. Rome was not built in a day. And therefore, you should never ever get frustrated if you do not realize the goal which you have set for yourself. And that you should know that there are no shortcuts in life and there are no substitutes to hard work. The another mantra which you should know is that nothing comes in life without discipline. And therefore you must lead the life like a disciplined soldier in the battlefield. And the third thing that I would like to emphasize upon is that you should also understand the significance of power of perseverance. Don't give up something which you find harder. If you continually persist that, you are certainly going to win. Another important thing which is very important to becoming a good human being is that you should always treat individuals with dignity. And only then the dignity will come to you. You should have an open mind to listen to others' arguments, even if they are at variance from your thinking, from your ideology. You must respect everybody's views. You should have a lot of resilience and patience. Many a time we find that people do not allow others to speak, and in between they start interjecting. If they find that the man is saying something which is not according to his thinking and according to his ideology, he or she also has equal right. And therefore, you should be a listened listener rather than a listened articulator. Another important thing that I would like to emphasize, that since you are going to receive the most prized position of your life from this institution, you should never ever forget your alma mater. You should never ever forget your teachers. And that means that you have an obligation towards your alma mater, you have an obligation towards your teacher, and you should always have the feelings of contributing to the growth and development of your alma mater. In howsoever manner you can do that. It's not that you should
continue pumping only money into the development of the institution, you can contribute in a variety of ways. You can donate library, you can make your services available to your alma mater. So never ever forget your alma mater. I can go on and on and on, but let me share one thought of which is very fascinating and a very important thought, and which we must remember in life. This is the thought of John Gardner, and it will help you in a great deal actually in your life. And I quote, "The things that we need to learn in maturity are not simple things like acquiring information and knowledge from the books. We need to learn not to burn our energy in anxiety. We need to learn that self-pity and diffidence are amongst the most toxic of drugs. We need to learn how to manage our tensions. We need to learn that the world loves talent but rewards character. We need to learn that most of the people in this world are neither for you nor against you. They are busy in themselves. We need to learn that no matter how hard you try to please, some people in this world are not going to love you. A lesson which is very troubling at the first instance, but once you know it, it is very relaxing." Unquote. I find this quote so apt that if we remember it, and if we adhere to it, and if we draw inspiration out of this quote, it will make our life much more easier. And the last, I would like to quote a part of the speech which was delivered by Madame Marie Curie when she was receiving the second Nobel Prize in 1910. And she said, I would earnestly request you to read her biography. And you would know that under what circumstances she delivered, under what conditions she used to carry out her experiments. She did not have access even to the proper lab. And people like us keep lamenting all the time about the facilities. I would also request you to read the biography of C.V. Raman, our Nobel laureate. I'm slightly digressing for some good, and let me share in brief the story of C.V. Raman first. Then I will go to Madame Marie Curie, because they are the people from whom we can derive a lot of inspiration. C.V. Raman was not a teacher when he invented C.V. Raman effect. He was working in the patent office as an accountant in the city of Calcutta. And look, he was not a Bengali. He was from Tamil Nadu, and he became C.V. Raman in the city of Calcutta. He started visiting the house of Mahendra Sarkar, who, like Mr. Garg, who is your chairman, was a great philanthropist, and who had put up some toys at his residence for the school children because he wanted to inculcate scientific temperament amongst the school children. And because C.V. Raman was living all alone in the city of Calcutta,
So he also started visiting the home of Mahendra Sarkar, and he also started playing with those toys. Of them, one of the toys he improvised upon by investing 137 rupees out of his pocket and invented CV Raman effect. And when he was to go and present his findings before the Royal Society in London, he did not have money, enough money to go. But I will cut that story short. So you should derive, the point that I was trying to make was that most of the time we keep either putting pressure on our parents or the management where we work, that we are not getting adequate facilities to be more productive. Look at these people. They are the people who have delivered against all odds and left behind a legacy which we are finding extremely difficult even to preserve, let alone talking of the expansion of that legacy. Now I go back to Madame Marie Curie, and I would like to share part of her speech when she was receiving the Nobel Prize, second Nobel Prize. And let me also tell you that she's the only woman until this day who has received two Nobel Prizes in two different domains of knowledge, in physics and in chemistry. Her husband also got the Nobel Prize. Her daughter also got the Nobel Prize, Irvin Curie. And her son-in-law also got the Nobel Prize. So there were 5 members in the family who got the Nobel Prize. Now let me close by sharing a brief statement of Madame Curie when she was receiving the second Nobel Prize. She said, and I quote, that nothing is to be feared in life. It is only to be understood. And now is the time to learn more so that we can fear less. Unquote. So, my dear boys and girls, I would very sincerely and earnestly request you to derive inspiration from the world statespersons and adhere to some of those things which I have shared with you a little while ago. You should also embrace values based on universal perception and values based on constitutional imperatives. And I would again request you to know the distinction between values based on universal perception and values based on constitutional imperatives, and for which you should read Article 51A of Indian Constitution, and from there you can derive values which are based on constitutional imperatives. With this, I take this opportunity to congratulate you once again for your outstanding performance. And since this is going to be the beginning of the new phase of your life, I hope that you would keep walking with your head held high, and that you will bring in laurels to your parents, to your samaj, and to your alma mater and to your teachers. With this, I wish you all the very best and great good luck. And I would also like to take this opportunity to express my very sincere thanks to Mr. Garg, Honorable Chairman of the college, my esteemed colleague, Professor S.K. Garg, and all other members of the management committee for having given me this opportunity to be with you and to wish all of you all the very best and great good luck. Thank you very much. Thank you, sir. We feel greatly honored by your presence here, which is a source of inspiration and encouragement to one and all. Your important lessons of life: be a lifelong learner from cradle to grave, invest in books,
and suggested biographies to read, have inspiring dreams, adopt a pragmatic approach towards life, treat failures and adversities as your best teacher will always be cherished by us for years to come. No shortcuts to success, no substitute to hard work. Importance of perseverance, resilience, and leading a well value laden and a well disciplined life will help us to attain our life goals. Thank you, sir. Moving ahead, we also have with us Shri S.P. Agarwal, Executive Chairman. Shri S.P. Agarwal is a retired IAS officer. During his career spanning over 35 years in IAS, Shri Agarwal has served with distinction in almost all positions in Government of Delhi, its associated bodies Government of India, and also headed the remote union territories outside Delhi. After his retirement from the IAS and government service in 2005, Shri Agarwalji had exposure at the senior most managerial level in leading companies in corporate sector and thereafter has been associated with various educational institutes with the objective of improving the academic standards and making the education more purposeful. We welcome you, sir, and request you to address the gathering. Sir, please unmute. Sir, please unmute yourself. Dr. Nandkishore Garg, Founder Chairman and Chief Advisor, Maharaj Agarsi in Technical Education Society, all other members of the Managing Committee of Maharaj Agarsi in Technical Education Society, Professor S.K. Garg, Director General, and Professor Ravi Kumar Gupta, Director, Maharaj Agarsen Institute of Management Studies, all graduating students, their families, and faculty of MAIMS. It is with great pride that I felicitate all graduating students and their families on this occasion of e-convocation of MAIMS, which is being called Convo MAIMS 2020. Dear students, today you are stepping into the next phase of your lives. As students, you are leading a more or less sheltered life where all that was required was for you to study and pass the exams. Now you would be entering an entirely different world, which is highly competitive, full of challenges and hurdles at every step. It won't be an exaggeration to say that the real world is like a jungle where laws of Darwin, namely survival of the fittest, applies. In order to survive, in order to rise in your professional career, you have to be better than others. That better can only come out of your acquiring more knowledge, having more information. I entirely agree with Professor Ved Prakash that unless you study, unless you get into the habit of studying and acquiring new knowledge, not only with what you are immediately concerned with, but also with what you might need in times to come, you would not be better than others, and therefore rising up in your career would be a problem. There would be many occasions when, in spite of your best efforts, you won't get recognition or the desired results. Please don't get disheartened in such situations and take it that perhaps the best you put in was not good enough for producing the desired results, and therefore more efforts are needed to be put in. It would also be appropriate to know that even in the wild, when lion, the king of jungle, hunts, he succeeds only in 25% of the cases. On 75% occasions, in spite of his toiling, in spite of his working hard, in spite of his planning and executing it,
in an immaculate fashion, he is not able to succeed in his hunts. But does he get disheartened? No. You all know that he does not get disheartened. He persists and succeeds. I'm sure with the sanskars that have been imparted to you at MAIMS, you would always be putting your best foot forward, and with your diligence, sincerity, and perseverance, you would win laurels not only for yourselves and your families, but also for MAIMS, your alma mater. The training that you have received at MAIMS will keep you in good stead wherever you go. Please always keep in mind that you will always be torch bearers of MAIMS, and whatever you do will always reflect on your alma mater. I'm confident that you will push for excellence, endure the grind, and emerge victorious in your life and careers. I also expect that you will be able to contribute positively to the society by being the best and doing the best in your chosen professional field. Please always believe in yourselves and seize the day. I'm sure you would always succeed in your life and be an example to the entire society and also wherever you are. Again, wish you the very best. Thank you very much. Thank you, sir, for being a part of the convocation ceremony with us today. Your guidance to the students to adhere to the principle of survival of the fittest in corporate life will definitely help them and motivate them to put their best foot forward. We have amongst us Dr. Nand Kishore Gargji, Founder, Chairman and Chief Advisor, Maharaja Agrasen Technical Education Society and Chancellor, Maharaja Agrasen University. Sir's inspiration and guidance has taken MAIMS to newer heights. Dr. Garg, a well-known reader and an orator, earned his degrees in chemistry and law from University of Delhi. He was awarded honorary D.Litt degree by Gurukul Vishwavidyalaya. He has a long association in politics, wherein he was elected as a member of Legislative Assembly and represented Delhi Vidhan Sabha for 3 times. He was given Best Parliamentarian Award also by the Delhi government. He has several awards to his credit, such as Sarvashresth Sahakari Karyakarta Saman, Chaudhary Brahm Prakash Smriti Saman Delhi government, Agra Ratn, Vaish Ratn, Samaj Ratn, Haryana Ratn, to name a few. Dr. Garg has strong interest in various social and religious associations with the prime motive to serve the society. He is presently pioneering the field of technical and professional education for the last 21 years. Sir, we request you to deliver the presidential remarks to the audience. नमस्कार, प्रोफेसर वेद प्रकाश जी, प्रोफेसर एस.के. गर्ग जी, रवि प्रकाश जी और हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी प्रोफेसर रहे हैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में श्री एस.पी. अग्रवाल जी, हमारे सभी महाराजा अग्रसेन परिवार के साथियों और आज स्नातक का जिनका दीक्षांत समारोह है, ऐसे सभी मेरे छात्र छात्राओं। विशेष परिस्थितियों में इस बार ये कन्वोकेशन है और 3-4 साल के बाद ये कन्वोकेशन है, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी पिछले 3-4 साल से डिग्री ही नहीं दे पा रही थी। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको समय के ऊपर पिछले 3-4 साल की सारी बैकलॉग भी क्लियर होकर डिग्रियां मिल रही हैं। स्नातक होना एक बहुत बड़े गर्व की बात है। पहले गुरुकुल थे और गुरुकुल से जब छात्र पढ़ लिख के बाहर निकलते थे तो उस समय गुरु उनको जो जीवन में प्रवेश करने के ऊपर जो कुछ शिक्षाएं देते थे उसको ही दीक्षांत समारोह था। स्नातक बनने के बाद आपकी
रिजल्ट्स आए हैं अभी तक वो बहुत ही आप लोगों के उम्दा हैं। मेरिट के अंदर पहले 20 पोजीशन में ऑन एन एवरेज 8-10 पोजीशन हमारे अपने विद्यार्थियों की हैं। इसमें जो पहली बार ही बीए इकोनॉमिक्स में भी पोजीशन आई है, बीकॉम ऑनर्स में भी आई हैं, और बाकी तो हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं। इन सब के अंदर आने वाले छात्रों से आप लोग मिलते रहें, उनसे इंटरेक्शन करते रहें, और जो विद्या प्राप्त की है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस देश में यूनिवर्सिटी सिस्टम जब से भी लगा 1854 के आसपास, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे शिक्षाविद थे जिन्होंने अंग्रेज के राज में भी 1934-35 में बंगला भाषा में कन्वोकेशन करा दिया था, और उसका पहला एड्रेस नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का था। एक बहुत बड़ी बात थी उस समय के दौर में, जहां अंग्रेजी का दौर दौरा हो, उनका वर्चस्व हो, उनका शासन हो, उस समय भी रास्ते निकालकर आगे बढ़ा जा सकता है। ये हमें एक रास्ता दिखाया। और अभी मैंने ये नेशनल बुक ट्रस्ट से छपवाई थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एज एन एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद के रूप में। उसको सभी शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को मैं चाहूंगा कि पढ़ना चाहिए। इस प्रकार जैसे वेद प्रकाश जी यूजीसी के सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एनसीईआरटी से शुरू कर और पूरे हार्वर्ड, कैम्ब्रिज सब जगह अपना एक नाम पैदा किया। इसी प्रकार कुल 33 साल की उम्र में उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो यूजीसी की प्री बॉडी थी उसके भी वो मेंबर रहे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से वो जुड़े। उनके पिताजी ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सीवी रमन को लेके गए, डॉक्टर राधा कृष्णन को लेके गए। तो शिक्षा का ऐसा क्षेत्र कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा समुद्र है, जितना गहरा हम जाएंगे उतना हम प्राप्त करेंगे। इसलिए आज भी मैं अपने जितने भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए मेरे प्राध्यापक गण हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो जीवन की शिक्षा भी पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ दें, ताकि एक अच्छे नागरिक बन सके, अच्छे मानव बन सके। और वो विश्व मानव बन सके तो बहुत अच्छा है, परंतु जहां भी जाए उनकी सुगंधी से पता चलना चाहिए एक अच्छे परिवार से हैं, अच्छे स्कूल या कॉलेज से एजुकेशन प्राप्त करके आया है। वो उसके चरित्र से चीजों का पता चलेगा। इसीलिए हमारे यहाँ जितना वेदों में, हमारे ग्रंथों में लिखा है उसका थोड़ा सा भी ध्यान दें। विद्या क्या है, मतलब आज भी हम पूछे शिक्षा क्या है, विद्या क्या है, ज्ञान क्या है, तो इंग्लिश के वोकैबुलरी से हम नहीं समझ सकते, ना समझा सकते। परंतु सा विद्या या विमुक्त है, विमुक्त करना, बंधनों से मुक्त कर देना ही विद्या है। इसी ढंग से विद्या ददाति विनयम, जो विद्या से हमें अगर विनय ना आए, हम नम्र ना हो, हम घमंडी ना बने, तो ये गुण है जो विद्या से ही आ सकते। इसलिए दीक्षांत समारोह में आचार्य क्या कहते हैं, सत्यम वद धर्मचर, सत्य बोलना सबसे मुश्किल काम, और धर्म का मतलब ड्यूटीफुल रहना। ये सब चीजें दीक्षांत समारोह का अंग होती थी। हमारे यहाँ भी रहा है, बड़े बड़े जगत गुरु सत्यामित्रानंद जी हमारे दीक्षांत समारोह में आए हैं। इससे पहले ज्यादातर हमारे यहाँ संत आए थे। और आज एक ऐसे शिक्षा के ऋषि में मान समझता हूँ जिनको एस.के. गर्ग साहब ने, क्योंकि उनके पुराने मित्र हैं और केमिस्ट्री में ही एमएससी पीएचडी और वो फेलो भी रहे हैं अमेरिकन उसके रॉक फेलर पे। मेरा भी विषय केमिस्ट्री रहा है, और मेरा भाई भी वेद प्रकाश जी के साथ एनसीईआरटी में डॉक्टर हरिओम रहे हैं। इसलिए मेरे भी संबंध इनसे इनडायरेक्ट बहुत पुराने हैं, और डायरेक्ट भी हमारे कॉलेज के एनुअल फंक्शन में भी आए थे। मैं उनका स्वागत करता हूँ। और एस.पी. अग्रवाल जी भी जो मूल रूप से एजुकेशनिस्ट ही हैं, और उसी रूप में उन्होंने करियर शुरू किया था। तो ग्लैमर आजकल IAS IPS में है, परंतु उनको बनाने वाले आप गुरुजन ही हैं, आप प्रोफेसर ही हैं, जिनके कारण से अगली पीढ़ी का निर्माण होता है। उसी निर्माण में से अगले भविष्य का निर्माण होना है। इसीलिए मैं समझता हूँ आज के हमारे प्रधानमंत्री, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी प्रोडक्ट रहे हैं, उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी लाकर हम सबका दायित्व बढ़ाया है कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी से लोग केवल नौकरी मांगने वाले, नौकरी भी केवल सरकारी नौकरी मांगने वालों की भीड़ में से कुछ ऐसे लोग निकले जो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से, रोजगार देने वालों के माध्यम से, जो पुराना हमारा अंग्रेजों के आने से पहले था उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखद चाकरी, आज उल्टा हो गया। और इस उल्टे को फिर से सुलटा करने का दायित्व
आज की इस 21वीं शताब्दी में आपके ऊपर, मेरे ऊपर, सबको है। और अब महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से नर्सरी से लेकर पीएचडी तक के हमने लोग तैयार करके समाज को दिए हैं। आज भी हमारा शिक्षा के क्षेत्र में एक जो योगदान है, या दोनों इंस्टीट्यूट दिल्ली के आईपी के तो नंबर 1 पर हैं, और मेड तो पूरे वर्ल्ड रिकॉग्नाइज धीरे धीरे हो गया है। मेम्स भी डॉक्टर कक्कड़ के टाइम में लोग कहने लग गए थे श्री राम कॉलेज इन बीके, तो उसको अब फिर से आपने उसको गतिशील बनाना है, और अपने रिजल्ट्स तो अच्छे बनाने ही हैं। अपने अच्छे विद्यार्थियों को समाज को देने में हम लोग समर्थ हो सके, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। और आप लोगों से प्रार्थना कि आप अपना 100% देने की कोशिश करें। ये सब आपके बच्चे हैं। आजकल वैसे तो बच्चे 1-1, 2-2 हो गए, ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में आपको तो एक एक टीचर के अंडर 200, 300, 400 बच्चों से हर साल कांटेक्ट आपका आता है। आपकी छाप उनके ऊपर पड़नी चाहिए, वो उनको याद रहना चाहिए। सुमेधा थी, विनीता जी थी, वो ये थे, वो संजय मंगला थे, रवि प्रकाश थे। वो याद रखेंगे तो वो आपकी असली कमाई है, वो आपके जीवन में कभी मिल जाए और वो आपके प्रति कृतज्ञता भाव से मैं समझता हूँ कि आपको ऐसा लगता होगा कि शायद लाखों रुपए की कमाई मेरी हो गई होगी। तो ये एक बहुत पुनीत कार्य में शिक्षा के क्षेत्र में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ये कोई रोटी कमाने का जरिया नहीं है। इंस्टीट्यूट चलाने वाले भी इसको यही मान के चले कि हम इस पवित्र यज्ञ में जुड़े हुए हैं, इससे रोटी कमाने वाला कुछ जुड़ गए बहुत लोग, उनको भी एक अलग कैटेगरी बननी चाहिए। और मैं वेद प्रकाश जी से चाहूंगा कि वो भारत सरकार को कई बार ये लिखें कि एक अलग सेक्टर है, ये प्राइवेट और पब्लिक की बजाय एक तीसरा सेक्टर जो इस देश का मूल सेक्टर था, जिसके कारण स्वामी दयानंद लाला लाजपत राय जी ने डीएवी शुरू की, राय केदारनाथ जी ने रामचंद्र इत्यादि शुरू किए, श्री राम जी ने श्री राम कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज, हिंदू कॉलेज, इन सब में योगदान दिया। ये एक अलग कैटेगरी थी जो वाकई सेवा भाव से जुड़े थे। ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार ये जो वेस्टर्न नकल करके प्राइवेट और पब्लिक की जो बात करते हैं वो भी उल्टी करते हैं। अमेरिका में प्राइवेट का, यहाँ पब्लिक स्कूल बोलते हैं, वहां उसको प्राइवेट बोलते हैं। उल्टा पुल्टा है हमारा देश। अब इसको ठीक ठाक करना है, नई पीढ़ी के माध्यम से ठीक होगा। एक अच्छे इस देश को योग्य नेता मिले हुए जो शिक्षा के माध्यम से मूल रूप से उसके ऊपर फिर जाएंगे और नई शिक्षा पॉलिसी के माध्यम से स्किल के अंदर फिर से जोरदार देंगे। हमारे जो ब्लड के अंदर स्किल थी उसको भी उजागर करेंगे, क्योंकि हमारे डीएनए में होता था जो लोहार का बेटा, बढ़ई का बेटा, उनके आज भी पंजाब का बढ़ई का बेटा और लोहार का बेटे को उतनी मशीनरी जानकारी इंजीनियर से भी 10 गुना ज्यादा। मैं देखता हूँ हमारे सरदार हरभजन सिंह हैं, एक मशीन दिखा दो उनको एक बार, किसी भी लेटेस्ट मशीन को, उसकी कॉपी मिल जाए तो वो उसको 1 साल में दूसरी बना के दिखा देता है, और 1/10 कॉस्ट पर। जिससे हमारी प्रतिभाओं को किया गया है, उस कुंठित प्रतिभाओं को फिर से खोलना होगा, उसको भी विमुक्त करना होगा। अपने ऊपर गर्व करने वाली पीढ़ी का निर्माण करना है, जो अपने ऊपर विश्वास करे, अपनी चीजों पर विश्वास करे। और ये जाने जैसे मैडम क्यूरी का भी बताया कि 5वां उसका, परंतु मेरे यहाँ भी जो पुराने साइंटिस्ट थे, भट्ट था, ब्रह्मगुप्त था, जितने भी मिहिर थे, जितने के वास्तुकला के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, आज के भी मंदिर 1000, 1200, 1500 साल पुरानों का जो आर्किटेक्ट है, कैसे उन्होंने इतनी ऊंची ऊंची चीजें बनाई थी जब मशीनरी नहीं थी। इसके अंदर थोड़ा जिक्र करें, थोड़ा चिंतन करें, तो हमें पता चलेगा पाइथागोरस से पहले ही 22/7 का मूल्य हमने क्या दिया था, डेसिमल हमने दिया था, हिंसा हमने दिया था। जिन लोगों का कैलेंडर भी 400 साल पहले तक इनपरफेक्ट था, जो अक्टूबर का मतलब ही 8 होता है, नवंबर का मतलब ही 9 होता है, सेप्टा 7 होता है, डेका 10 होता है, जिनके महीने उस न्यूमेरिकल होते हुए भी आज उल्टे पुल्टे हो गए, वो आज अपने ऊपर गर्व करते थे क्योंकि उनका विश्व पर राज था। आज हम फिर से सक्षम बनेंगे, अपने ऊपर गर्व करेंगे और लोगों को बताएंगे कि हम विश्व के अग्रणी वैसे ही नहीं थे, विश्व गुरु वैसे ही नहीं थे, हमारे अंदर क्षमताएं थी। हम 1000-1200 साल की गुलामी के कारण हमारे विश्वविद्यालय नालंदा जैसे को जलाने में 1.5-2 साल लगा हो, हमारा तक्षशिला, हमारा विक्रमशिला, ये सब हमारे जो हेरिटेज थे, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। हमारा कालखंड भी गलत कर दिया, 1000 साल हमारे गायब कर दिए, चाणक्य को 2500 साल बताने लग गए। अब ये सिद्ध हो जाएगा कार्बन डेटिंग से और सब चीजों से
सब चीजें ठीक होंगी और बहुत जल्दी ठीक करना है हमने। इसी आने वाले 5-10 साल में ठीक करना है, ताकि हम तेज गति से आगे बढ़ते हुए सबका मंगल चाहने वाली संस्कृति है। पूरी वसुधा पर रहने वालों को परिवार भाव से देखने वाले केवल और केवल हम हैं। और यदि विश्व को यदि परिवार मानेंगे तो कंफ्लिक्ट दूर होंगे। रशिया के अलग हुए दो देश आज आपस में झगड़ रहे 1 महीने से। क्यों? क्यों अनारकी है? क्यों? कहीं लव जिहाद है, कहीं पर ये छुआछूत है। ये सब चीजें बंद होनी चाहिए और एक नया समाज, समतावादी समाज, जिसमें सबका विकास हो सके, सब साथ मिलकर काम करें, सब भारत माता की संतान हैं और सब भाई बहन हैं। ये भाव सबके अंदर हमने जगाना है। हर हर एक बेटी, हर एक महिला मेरे के लिए जीवन में कोई एक निश्चित है, उसको छोड़ के मेरी माँ, बेटी, बहन है। ये भाव भी पढ़ाते पढ़ाते हमें लाना होगा, जब इस देश का चरित्र उस निर्माण, उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जिसके ऊपर हम गर्व कर सके। आज इस दीक्षांत समारोह में सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन प्राप्त की है, उनको बहुत बधाई। जो स्नातक हुए हैं वो जीवन में आगे बढ़े, अपने माता पिता की सेवा करते हुए समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण चाहने के लिए आगे बढ़ते हुए आप लोग जीवन में सफल हों। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रोफेसर एस.के. गर्ग जी, रवि प्रकाश जी और उनके सभी सहयोगी जो पिछले 10-15 दिन से इस कार्यक्रम में लगे हुए थे, उनको भी आज बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। जय भारत। Thank you, sir. We thank you for your benign presence and inspiring words. Nation develop on the strength of education, and as an educationist, you have touched and changed the lives of generations of students. Be dutiful, truthful, and absorb the principles of Vedas in day-to-day life are indeed the valuable lessons of life shared by you. Thank you, sir. And we request you to release our convocation souvenir and also MAIMS Economic Journal. The convocation souvenir is a result of the painstaking efforts made by the team under the unwavering encouragement of our former chairman, Dr. Nandkishore Garg ji, Professor S.K. Garg, Director General, and Professor Ravi Kumar Gupta, Director MAIMS. Thank you, sir. We also have MAIMS Economic Journal. It is with profound pleasure and humility that we celebrate the launch of MAIMS Economic Journal with this inaugural issue. On behalf of the journal's editorial board comprising of Dr. Nandkishore Garg, Chief Patron, Professor S.K. Garg and Professor G.P. Govil, Patrons, Professor Ravi Kumar Gupta, Editor-in-Chief, Dr. Sanjay Kumar Mangla, Editor, Dr. Gaurav Agarwal, Ms. Nikita Jain, and Ms. Diksha Goyal as Assistant Editors. I extend a very warm welcome to the readership of MAIMS Economic Journal. Thank you once again, sir. The testing times of COVID-19 has compelled us to make arrangements for online award of degrees for our students of BBA, BJMC, and BCom of batch 2016-19. The conferment of degrees for Bachelor of Business Administration will be done by Professor Vijay Kumar Khurana, Head Department of Business Administration. Professor Vinita Gupta, Head Department of Journalism and Mass Communication, will confer the degrees to BJMC students. And for Bachelor of Commerce, we have Dr. Manju Gupta, Head Department of Commerce. So we proceed with the online degree award of BBA, BCom, and BJMC graduates of batch 2016-19. Thank you.
A very warm good afternoon to all present. I, Kamna Ved, on the behalf of Maharaja Agrasen Institute of Management Studies, welcome our founder chairman and chief advisor mates, Dr. Nankishore Garg, our chief guest, Professor Ved Prakash, former chairman UGC, all the dignitaries present, and our dear students of MAIMS for the e-convocation ceremony, Convo MAIMS for BBA, BCom Honours and BAJMC courses, batch 2016-19. Talent and skills are the crops that are nurtured, groomed, and given all possible opportunities to grow and bloom. Graduation day is the celebration of the harvest of this crop. There's a lot more to come. Goals, challenges, and opportunities. Anything is possible when you just believe in yourself. Let's begin your new journey with the blessings of Goddess Saraswati. Ya kundendu tushar har dhavala Ya subhravastra vrita Ya veera varadanda mandita kara Ya shveta padmasana Greetings of the day. It is really a proud moment for me to commence the conferment of degree for the batch 2016-2019. I request the recipients of the degree of Bachelor of Business Administration to please join us virtually. I now call upon the names of the students who have successfully completed the prescribed course of study and have been found to be fit for the award of the said degree. Their names are Abhi Bhardwaj, Abhinav Arora, Abhishek Kumar, Akansha Kohli, Akhil Jain, Akshita Agarwal, Aman Jain, Alok Gupta, Amandeep Singh, Adesh Kumar Kothari, Archit Jain,
आशी मित्तल, आयुष गुप्ता, भावना जैन, भूपेश मेपाल, चैतन्य अरोड़ा, चेष्टा चुग, देवेश वर्मा, धैर्य कुमार, अग्रवाल, दिव्यांशु गुप्ता, वरांग सिंघल, हीना शर्मा, हिमांशु पालीवाल, हिरेन करदम, ईशान गुप्ता, जतिन प्रसाद, जयंत कुमार, कपिल बाकू, कार्तिक अरोड़ा, कार्तिक लांबा, कार्तिक मित्तल, केशव सापू, लतिका गुप्ता, लव सिंह चौहान, लवेश राज, महिमा चावला, मनन कौशिक, मनन खुराना, मानसी कंसल, आस्था जैन, अदिति बंसल, आयुष जैन, भव्य जैन, काजल गुप्ता, मयंक बंसल, मयंक दुआ, मयंक सिंघल, महक गुप्ता, मेहू दयाल, मोहम्मद अमान सुहेल, मुस्कान सुराना, नितिका गुलिया, नित्या बंसल, पारुल कौशिक, प्रबल जैन, पुनीत कुमनानी, राहुल जैन, रजत गुप्ता, रत्ना ठाकुर, रिया, रिया जैन, रोहन मलिक, रोहित सिंघल, साहिल, सलोनी कटोरी, संगम बंगाल, संगमित्रा गौतम, संजीवनी सेठी, सौरभ अग्रवाल, शिवम गोयल, शिवम सिंघानिया, शिवानी राणा, श्रेय भाटिया, शुभम भाटिया, शुभम गुप्ता, सौम्या गुप्ता, सुरभि अग्रवाल, सूर्यांश मोहन, उमेर खालिद, नैन्सी बंसल, नुपुर गुप्ता, साहिल मंगला, रजत जैन, साक्षी गुप्ता,
वैभव आनंद, वैभव डोगरा, विशाली तोमर, वरुण ढींगड़ा, वरुण मित्तल, वृंदा, अर्नव गुप्ता, मुस्कान जैन, चारू गुप्ता, निशांत मान, सार्थक सूरी, विशेष जैन, यतिन सुनेजा, दिशांत सिंह, दीपक अंचलिया, हर्ष बेंगानी, शौर्य शर्मा, अभिनंदन जैन, प्रियांशु चौहान, संभव लखनपाल, सार्थक चंद्रा, शुभम गुप्ता, संयम गुप्ता, आशुल जैन, जसप्रीत सिंह कोहली, वनिका मंगला, आयुष गोयल, नुपुर गर्ग, आदित्य मल्होत्रा, आरुषि धवन, काजल गर्ग, तनुज सकूजा, सर्वेश गुप्ता, सम्यक जैन, रिपुदमन सिंह, जानवी परूथी, शुभम लखोतिया, गुनी सिंह सानी, गर्वित अरोड़ा, पुनीत गुप्ता, सौम्या गुप्ता, विदित गुप्ता, साक्षी सिंगल, संजना अग्रवाल, सार्थक बंसल, सुधांशु कुमार, सुरभि गुप्ता, युगल सेठी, अमन गुप्ता, ईशान गोयल, तन्वी दहिया, दीपांक अग्रवाल, अमन जैन, सृष्टि सिंघल, युक्ति बंसल, यशिका गर्ग, मानसी गर्ग, पारस शर्मा, अनिकेत गुप्ता, शिवम बंसल, शुभम गुप्ता, शालीन डुडेजा, नित्यई गुप्ता, संचित गुप्ता, यश गोयल, आंचल सोरियान, अब्दुल्ला उजैर, अभिषेक बंसल, आदित्य राज चौहान, आदित्य सिंघल, आकाश सोलंकी, अक्षय आहूजा, अंकिता बंसल, आशीष कुमार भगत, अश्मीत सिंह,
आशना अग्रवाल, अतिशय जिंदल, अतुल दहिया, भव्य तुली, ब्रिजेश कालड़ा, चैतन्य कपिल, चेतना महावर, चिराग अग्रवाल, चिराग वर्मा, दीपांशु गुप्ता, देवांश अरोड़ा, देवांश दीक्षित, धैर्य कपूर, ध्रुव सहगल, दिव्या गुप्ता, दिव्या भाटिया, दिव्यांश खरबंदा, इवा गुप्ता, हार्दिक पहूजा, हरपाल सिंह, हर्षित मदान, हितेन नैयर, ईशांत कालड़ा, करण सेकरी, खुशबू डागा, किरित गुप्ता, कुहू अरोड़ा, आदित्य पालीवाल, अनमोल अग्रवाल, अर्जुन बटारा, आयुष अग्रवाल, आयुष चौधरी, आयुषी जैन, अखिल गुप्ता, लक्ष्य गुप्ता, माधव सेतिया, महिमा अग्रवाल, महिमा भाटिया, मानव, मयंक पटवाल, हिमांशा मनोज, मोनिका पूनिया, मुस्कान भाटिया, नमन जैन, नमन जैन, निहारिका नागपाल, निकुंज सिंगल, निमित गुप्ता, निशांत चांदना, पार्थ नागपाल, प्रज्ञा मदान, राघव जैन, राहुल बजाज, राहुल गोयल, राहुल हुड्डा, राजदीप मुखर्जी, रमन यादव, राशि धीर, ऋषभ शलानी, रौनक गुप्ता, साधना, संचित महाजन, सारांश गुप्ता, सार्थक डावर, शांतनु ओबराय, शिवम बजाज, श्रीधर चतुर्वेदी, शुभम गुप्ता, शुभम जिंदल, शुभम मित्तल, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ भारद्वाज, सिद्धार्थ गर्ग, सुहानी चावला, सुमित लांबा,
सुरभि रस्तोगी, मनीष गुप्ता, निकिता कक्कड़, प्रज्ञा गुलाटी, राधिका गुप्ता, ऋषभ वर्मा, वैभव कोहली, वरुण चड्डा, वरुण गुप्ता, विभोर सेठिया, योगेश शरण, दिव्या गोयल, सप्रिया चंद्रा, अनमोल चौधरी, सहज रावत, हर्षल जिंदल, साहिल अरोड़ा, विभा शर्मा, सितकदेव सिंह बवेजा, दिव्यांशु बागची, अक्षत गुप्ता, गौरव हुड्डा, ऋतिक मोटवानी, तानिया दीवान, स्पर्श जैन, सिमरन कौर भुल्लर, श्रेया गोयल, कृतिका जैन, सुमित भाटी, अनन्या, सृष्टि जैन, ऐश्वर्या श्रीवास्तव, करण मित्तल, कोमल गर्ग, स्पर्श बंसल, भुवन शर्मा, रिया गोयल, निखिल सनन, शिवानी भाटिया, आयुषी डोंडियाल, भारत भूषण, पीयूष शर्मा, अनु सिंगल, वंशिका जैन, तान्या सिंह, यशस्वी शर्मा, रोहन बजाज, रोहन बंसल, स्पर्श जैन, तुषार, वैभव वर्मा, तुषार सिंगल, मोहित शर्मा, ध्रुव गुप्ता, ऋषभ गर्ग, सक्षम अग्रवाल, पुलकित सिंगल, आशीष सिंगल, रजत अग्रवाल, अध्ययन अग्रवाल।
proud moment for me to commence the conferment of degree for batch 2016-2019. I request the recipients of the degree of Bachelor of Commerce to please join us virtually. I call upon the names of the students who have completed the prescribed course of the study and have been found fit for the award of the said degrees. Their names are Akriti Suri, Abhishek Agrawal, Ambar Sharma, Geet Jetwani, Gopal Anand, Kuljeet Singh, Manav Arora, Rupesh Pandey, Sachin, Saloni Suhag, Sanjana Gupta, Soumitra Sharma, Sharat Menon, Shavik Day, Shubham Goyal, Surat Singh, Tarun Singh Chauhan, Ujjwal Kumar Jha, Vipul Thakral, Kamal Kishore Bansal, Rishita Jain, Sahil Gupta, Vasu Agrawal, Mayank Kansal, Akshit Dhingra, Adit Khosla, Ayush Singhal, Prakshal Jain, Mirza Kaum Beg, Raghav Bansal, Prasann Jain, Parul, Chirag, Rohit Sharma, Chetan Chugh, Yashasvi Sharma, Raghav Garg, Sajal Goyal, Shruti, Ajay Garg, Mahima Garg, Shreya Jain, Nitish Patwari, Kartik Rana, Abhinav Arora, Aditya Chawla, Aditya Jain, Aditya Talwar, Akshay, Devanshu Dhal, Love Malhotra, Madhav Arora, Madhav Gupta, Mayank Goyal, Mayank Jain, Mithun, Mukul Jain, Nikhil Agrawal, Nikhil Bhardwaj, Parmeet Singh Sethi, Raghav Kapoor, Rahul, Randhir Pratap, Rishabh Gupta, Rohan Agrawal, Rohan Mandal, Sanyam Sopti,
शिवम बांगा, शौर्य गुप्ता, श्रुति गुप्ता, सिमरन कुकरेजा, सूरज अग्रवाल, स्वप्निल ठकराल, तुषार त्यागी, उज्जवल शर्मा, विनय लांबा, अंकित कुमार झा, पार्थ गुप्ता, साहिब जग्गी, गौरव, तुषार अग्रवाल, शिवम गुप्ता, सचिन विजय, रिया बंसल, श्रेष्ठ गुप्ता, ललित कुमार यादव, पारस गर्ग, साक्षी अरोड़ा. Congratulations to all degree awardees and best wishes for your future endeavors. Thank you. Proud moment for me to commence the conferment of degree for batch 2016-2019. I request the recipient of the degree of Bachelor of Arts, Journalism and Mass Communication to please join us virtually. I call upon the names of the students who have completed the prescribed course of the study and have been found fit for the award of the said degree. Their names are Akanksha Verma, Akanksha Gupta, Anish Ganguly, Anshul Kochar, Ashish Sharma, Ashmeet Kaur, Atul Singh, Ayush Pandey, Ayush Singh, Chirag Puri, Dhruv Banyal, Ishpreet Singh Bedi, Joyjeet Singh Nagpal, Kashish Sharma, Kritin Khanna, Lakshya Vadhera, Mahima Khattar, Mahima Maurya, Omna Mutreja, Prachi Arora, Rishabh Gupta, Riya Pahuja, Riya Samarth Kaushik, Srishti, Sumit Kumar Ranga, Tushar Kheda, Tushar Poddar, Vaibhav Ratra,
Vaishnavi Pal, Ankita Mittal, Diksha Agrawal, Nakul Gupta, Aman Bharti, Ishpreet Kaur Saini, Jigyasa Pandey, Paridhi Gupta, Soumya Gupta, Sarthak Bharadwaj, Shreya Batra, Sachet Shaukin, On behalf of the faculty, staff, and administration of MAIMS, we once again extend our congratulations to the graduates for their outstanding achievements and its well-deserved pride. I now request Dr. Rachna Jain, Assistant Professor, Department of Commerce and Convener, Convocation Organizing Committee, to propose the vote of thanks. Dr. Rachna Jain was awarded a doctorate in finance from the University of Delhi. With over 12 years of experience in teaching, she has published and presented 16 research papers in national and international journals. Over to you, Dr. Rachna Jain. A very good afternoon, one and all. I, at the very outset, on behalf of Maharaja Agrisem Institute of Management Studies, extend my heartiest congratulations to all you graduating students who are being awarded your degrees today. It is my proud privilege to propose the vote of thanks on this momentous occasion. I wish to express my sincere gratitude to our Honorable Chief Guest, Professor Ved Prakash, former Chairman UGC, for having spared his valuable time to join us on this occasion of online convocation ceremony. Sir, your convocation address was insightful and one that inspired hope, optimism, and pride in all of us. We shall cherish this day with you long after the convocation is over. My deepest gratitude to Dr. Nand Kishore Garg, former chairman and chief advisor MAIMS, for his guiding vision. Thank you, sir, for being the catalyst of the change for so many of us. I also want to convey my earnest thanks to all the honorable members of the MAIMS or Managing Committee. Shri Vineet Kumar, Chairman, Shri S.P. Agarwal, Executive Chairman, Shri Manoj Singhal, Senior Vice Chairman, our Vice Chairman of the Society, Shri Sundar Lal Goyal, Shri R.K. Gupta, Shri S.P. Goyal, Shri Umesh Kumar Gupta, Shri Kailash Chand Bansal, Shri Jagdish Mittal, Professor M.L. Goyal, Academics, and Shri S.C. Daya. Shri T.R. Garg, General Secretary, Shri Mohan Garg, Joint General Secretary, Shri O.P. Goyal, Treasurer, Shri Anand Kumar Gupta, Co-Treasurer, Shri Gyanendra Srivastava, Chief Executive, our Secretaries of the Society, Shri Satish Garg, Shri Gyanchand Agarwal, Ms. Sangeeta Gupta, Shri Nitin Gupta, Shri Madan Mohan Goyal, Shri Rajneesh Gupta, and Shri Avinash Agarwal. Our advisors, Professor Munish Kumar, Professor I.M. Kapahi, Professor G.P. Govil, Professor N.K. Kakkar, and other distinguished members of Trust. I express my heartfelt gratitude to the management for giving me this opportunity to organize this event. I thank them all for the support, encouragement, and valuable suggestions that have helped in the final commencement of the event today. My heartfelt thanks to Professor Neelam Sharma, Director MAIT, and Professor S.S. Deswal, Dean of Academics, who have always been supportive of every activity at the Institute. My sincere thanks to our Director General, Professor S.K. Garg, and Director Sir, Professor Ravi Kumar Gupta, who have been the pillar of strength and whose advice and compassionate concern for students is remarkable. I also convey my thanks to Professor Sangeeta Malik, head of the department's team.
My special thanks to all our program heads, Professor Dr. Vijay Kumar Khurana, Head Department of Business Administration, Professor Dr. Vinita Gupta, Head Department of Journalism and Mass Communication, and Dr. Manju Gupta, Head Department of Commerce, for their prompt support and ready assistance at all times. Last but not the least, I would want to specially thank my organizing team, Dr. Sanjay Mangla, HOD Economics, Ms. Sumedha Datta, Dr. Nisha Jindal, Ms. Kamna Vaid, Mr. Praveen Kumar Singh, Ms. Shilpa BSL, Ms. Shikha Sharma, Ms. Neetu Agarwal, Mr. Vijaypal Singh, Ms. Kajal Mittal, Mr. Surinder Garg, and Mr. Umesh Singh. Today's event would not have been possible without the untiring efforts and energetic contribution by each of the organizing team members. I convey my heartfelt gratitude to each of them and must say that I enjoyed working with them. I also expressed my wholehearted gratitude to all my fellow colleagues and students who have joined us today and have made this event, Convo MAIMS 2020, a resounding success. In the end, I, on behalf of Organizing Committee of Convo MAIMS 2020, would like to tell our graduating students, no matter where you are, no matter what you do, never stop believing in the genius within you. Wishing you all a great future ahead. Stay blessed. Thank you. Over to you, Sumedha ma'am. Thank you, Dr. Rachna Jain. I now request all the dignitaries and participants to stand at their place in honor of the national anthem of our country. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Dear students, your graduation journey comes to an end today, and another door awaits you with lots of opportunities, chances, and challenges. As you leave the gates of your alma mater, kindly embody the ideals that were implanted and show the world your distinctiveness with gratification. My dear students, wish you good luck for the journey ahead. Thank you, one and all. Thank you for your cooperation and sharing your valuable time with us today. Thank you. Thank you. With this, we come to an end of the ceremony. Thank you.